सो गाइस बेसिकली हम लोग आए हैं जॉय डिस्ट्रीब्यूटर्स लवरापेर में अपने बढ़िया सा पीसी बिल्ड कराने। सो यहाँ हमारे पीसी बिल्ड के इंचार्ज ऋतिक भैया हैं जो अभी हमारा पीसी बिल्ड करने में व्यस्त। सो हमारे पीसी का जो स्पेक्स है वो हम वीडियो के बीच बीच में बताते रहेंगे, तो उसकी कोई चिंता नहीं है। तो अभी भैया ने गीगाबाइट कंपनी के मदरबोर्ड पे 12th जेन का इंटेल कोर i5 12400F का प्रोसेसर लगाया है। फिर हमने DDR4 का 16 GB रैम अपने पीसी के लिए सेलेक्ट किया था, तो वो भी मदरबोर्ड पे अब इंस्टॉल हो चुका है। अब हमारा गीगाबाइट कंपनी का NVIDIA GeForce GTX 1650 का ग्राफिक कार्ड अनबॉक्स हो रहा है। बेसिकली ये हमारा गीगाबाइट कंपनी का ही पावर सप्लाई यूनिट है जो हमारे CPU यूनिट्स में पावर मदद करता है। सो अब पावर सप्लाई यूनिट्स के कॉर्ड को मदरबोर्ड के यूनिट से कनेक्ट करने जा रहे हैं। अब भैया ये चेक कर रहे हैं कि क्या मदरबोर्ड के सारे यूनिट्स और पावर सप्लाई यूनिट प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं। सो गाइस बेसिकली अब हमारा RGB कैबिनेट अनबॉक्स हो रहा है ताकि CPU यूनिट्स अलोंग विद पावर सप्लाई यूनिट उसमें फिट कर दिए जाए।
तो गाइस अब फाइनली सीपीयू वर्क कर रहा है और लाइट्स को देख के मेरे दिल और दिमाग में तो लाइट्स ही जल रहे हैं। काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ अपने इस पीसी को लेके। अब जल्दी से जल्दी इसको टेस्ट करने का बहुत मन कर रहा है। सो गाइस अब विंडोज इंस्टॉल हो चुका है और अब MS ऑफिस डाउनलोड करने जा रहे हैं। तो गाइस ये हमारा सीपीयू है और क्या तगड़े फैन लग रहे हैं। लाइट्स का तो कोई जवाब ही नहीं। एक साइड से टेम्पर्ड ग्लास से सीपीयू को कवर कर दिया था। सो गाइस ये है हमारा सैमसंग कंपनी का 24 इंच मॉनिटर। तो गाइस यही हमारे सेटअप में एक लेनोवो का आइडियापैड गेमिंग माउस, एक डेल कंपनी का एक कीबोर्ड और अलग अलग कंप्यूटर यूनिट्स जो हमारे का बहुत काम आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।